Good evening, everyone. I'm Sayukta from Bladder Wellness Team. I'm sure all of you must be keeping good health. Today, we are going to discuss a very important topic, prostate cancer. Prostate cancer develops in a man prostate, the volume-sized gland just below the bladder that produces some of the fluid in semen. It's the most common cancer in men after skin cancer. Prostate cancer often grows very slowly and may not cause significant harm, but some types are more aggressive and can spread quickly. Let's unite to raise awareness about prostate cancer and its impact in the life of people living with it. To throw more light on the subject and guide us on what's right for diagnosis and treatment of prostate cancer, today we have with us Dr. Prashant Kumar Pradhan. Dr. Prashant Pradhan is a renowned senior consultant in the Department of Urology, and he is working at Jaipur Golden Hospital, New Delhi. Dr. Prashant Pradhan has rich experience in the field of urology and carries out the treatments with utmost precision and efficiency, ensuring that patients' health is in safe hands. A very warm welcome to you, Dr. Prashant Pradhan. Hope you are doing good, sir. Okay, yes, I'm doing good. Okay, it's a pleasure to have you with us for this session, doctor. And today we will like to understand what is prostate cancer first. What is prostate cancer? Basically, prostate gland is a walnut-sized gland that present below the bladder. Right. The prostate gland, it may be that is the abnormal, uncontrolled growth of the cells in the prostate gland is called cancer. Right. Cancer means that is uncontrolled, abnormal growth of cells in the gland is called cancer prostate. And most of the in prostate cancer, there are several types of cancers developed in the prostate. Most common is adenocarcinoma of the prostate. Other rare variety of cancers that affecting the prostate is small cell carcinoma, transitional cell carcinoma, sarcomas, and neuroendocrine tumors. But the most common is adenocarcinoma of the prostate. Okay, doctor. Now, the thing is that after a certain age, we say that in men, because prostate as a gland is present in men, they normally have such issues related to prostate, like frequency, urgency in urination, etc., which when they go get it diagnosed, the doctor most of the time says कि आपका prostate जो है बढ़ गया है size में, enlargement of prostate has happened. वो बहुत कॉमन होता है इनफैक्ट कई मेल्स ऐसे हैं जिनसे अगर पूछो कि आपको इतनी अगर प्रॉब्लम हो रही है फ्रीक्वेंसी की अर्जेंसी की तो आप डॉक्टर को क्यों नहीं दिखा रहे हो तो वो तो कहते हैं कि अब मेरी एज हो रही है एंड यू नो दीज ऑल थिंग्स आर एसोसिएटेड विद एज तो कई लोग तो प्रोस्टेट से रिलेटेड इश्यूज को दिखाने ही डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं दे कीप ऑन सफरिंग इन साइलेंस Thus, my question is कि prostate से related issues बहुत common है चाहे वो enlargement हो और जैसा आप बता रहे हैं कि prostate cancer भी होता है जिस पर आज इस सेशन में हम बात करने वाले हैं. So my concern is that how can we prevent or diagnose early if we are having this kind of cancer? हमें क्या करना चाहिए? That's why you go for a prostate screening procedure if you have any urinary complaints or if you are more than 50 years of age, then you have to go for prostate screening. That is, you go to a urologist for your evaluation of the prostate or of your urinary complaints, and they do a simple test, serum PSA and digital rectal examination. That will give you some idea about regarding you have some prostate cancer or not. So it is better to if you have the age crossing more than 50, then you should go for a prostate screening. That you do a serum PSA test and digital rectal examination should be done by a urologist, so that we can detect early the cancer's development in the prostate. So that if you diagnose early or detect early, the treatment should be early and the patient survival is very in a better way. Right, survival will be improved. Right. The Otherwise, early it is diagnosed, the early the treatment, etc., can take place, and people and the patient can live a happy life. Yeah. Okay, doctor. Now, what are the main causes of this cancer, doctor? Basically, there are no definite cause of this cancer, but there are some risk factors causing this cancer. That is, one of the cause is more than the aging.
old age. If the age is more than 50, the chances of, while you're getting older than 50, the chances of cancer risk is increased. If it is very rare below the age of 40. Okay. Around 60, the incidence will increase. If age increasing around 70, the risk also increased. One factor is age, increasing age. Another risk factor is obesity. Okay. It may causes the risk of cancer is increased in obese patient in comparison to the lean and thin build patient. And most of the time, the cancer developed in an obese patient is mostly aggressive cancer in comparison to thin build patients. And some have very high risk in patients who had family history of cancer prostate. If a patient is having a family history of prostate cancer, then the chances of getting a cancer in his offspring is very high. So if you have a family history, you should always go for a screening for the cancer prostate. Right. And if a patient is taking high alcohol intake or high fatty diet, then that is also some chances of increasing cancer risk. And some races, like if your race is black males are having a higher chances of cancer prostate than the white males. Okay. So these are the risk factors, but the definite etiology is still not known. But these are the high risk factors for developing a cancer prostate. Okay, doctor. And as you said that, it is aging is one of the causes, right? One of the risk factors, rather. Now, my question is, and you also initially emphasized on the importance of screening and prostate screening. हम हमेशा कहते हैं कि एक एज के बाद एनुअल चेकअप कराते रहना चाहिए, साल में एक बार एक ओवरऑल हेल्थ चेकअप कराते रहना चाहिए, तो हमको पता चलता रहता है कि क्या क्या एबनॉर्मलिटीज हो रही हैं, या ऐसा कोई जगह जहाँ पे कुछ ज्यादा प्रॉब्लम है तो उसे हम एड्रेस कर सके, क्योंकि इस बात से कोई डिनाई नहीं कर सकता कि एज के साथ कॉम्प्लिकेशंस बढ़ते हैं, हेल्थ थोड़ी थोड़ी डिटोरिएट होती है। तो ऐसे में आपने ये भी कहा कि 50 प्लस के बाद जो है एक बार स्कैन करा लेना चाहिए, प्रोस्टेट स्कैन। तो अगर एक रेगुलर एनुअल चेकअप हम कराते रहे, ये एक हैबिट में ले आए आफ्टर अ सर्टेन एज, एज यू सेड 50, तो क्या देयर आर चांसेस कि हमको पहले ही पकड़ में आ जाएगा अगर कुछ दिक्कत हो रही होगी? That's why we have some from different urology society, they run a program, prostate screening week. They throughout the world they go for a prostate screening week, so that in that week, if you are more than 50, we advocated you should go for a prostate screening. That is, you do few tests. One is doctor, yeah, right. And another is ultrasound and digital examination. Then you can detect a simple test, one blood test, that is serum PS, another examination, another is ultrasound. This basic test will give you some idea regarding prostate health. ओके डॉक्टर, फेयर इनफ। एंड जैसा कि आपने बताया कि प्रोस्टेट स्क्रीनिंग वीक सेलिब्रेट किया जाता है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस बात के लिए अवेयर किया जाता है कि आप अपना प्रोस्टेट स्क्रीनिंग जरूर करवाएं। वैसे ही हम ये भी हमारे व्यूअर्स को बताना चाहेंगे कि ये सितंबर चल रहा है और कई देशों में सितंबर प्रोस्टेट कैंसर अवेयरनेस मंथ के तौर पे मनाया जाता है, जहां अलग अलग कार्यक्रम किए जाते हैं, प्रोग्राम्स किए जाते हैं, ताकि लोगों को हम अवेयर कर सके कि सी प्रोस्टेट कैंसर होता है, विच इज वेरी कॉमन इन मेन, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। आप रेगुलर चेकअप जरूर करते रहे, और जैसा डॉक्टर ने कहा है प्रोस्टेट स्क्रीनिंग जरूर कराए एक एज के बाद, तो वो जरूर कराते रहे। इन केस कुछ हो रहा होगा, कुछ भी एबनॉर्मलिटी होगी, तो वो पकड़ में आ जाएगी और जल्दी ट्रीटमेंट होगा। सिम्टम्स के बारे में भी डॉक्टर हम आपसे जानना चाहेंगे, व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ प्रोस्टेट कैंसर? This prostate cancer is a very slow growing cancer. And if the cancer confined to the prostate gland, hardly patient develops any symptoms. If the cancer grows outside the prostate gland and spread to different parts of the body or different organ, then that will develop some symptoms. But most of the symptoms are initiated with urinary symptoms. Increased frequency of urination, obstructed voiding,
or blood in urine, blood in semen, and there is pain in the bone. If he sprayed to the bone, there is pathologic fracture. If there is pain in the bone, loss of weight, loss of appetite, and the erectile dysfunction, urinary incontinence. These are the symptoms the patient in advanced prostate cancer patients develop. Okay. Initially, they started with right. तो कई सारे सिम्टम्स जो हैं वो यूरिनेशन से रिलेटेड जो कॉम्प्लिकेशंस है, जो सिम्टम्स है वैसे ही होते हैं और इसके अलावा कुछ और चीजें भी हो सकती हैं, लेकिन आर यू आल्सो ट्राइंग टू से डॉक्टर कि कई बार सिम्टम्स होते ही नहीं है, अगर बहुत ही इनिशियल स्टेज पे हो या सिर्फ प्रोस्टेट ग्लैंड तक ही वो अभी सीमित है, अभी बहुत ज्यादा फैला नहीं है, तो देयर आर चांसेस कि बहुत सिम्टम्स ना हो, क्योंकि नॉर्मली हम क्या करते हैं एज अ पेशेंट, हम वेट करते हैं जब तक सिम्टम्स नहीं होंगे, तो हमको लगता है हम बिल्कुल ठीक है। तो अगर आप कह रहे हैं कि सिम्टम्स ज्यादा नहीं होते या नहीं हो भी सकते हैं इनिशियल पीरियड, तो ऐसे में और ज्यादा इंपॉर्टेंस जो है प्रोस्टेट स्क्रीनिंग की बढ़ जाती है। जी डॉक्टर, डॉक्टर ये भी आपसे जानना चाहेंगे ट्रीटमेंट कितने अवेलेबल है प्रोस्टेट कैंसर को लेकर, क्या क्या ट्रीटमेंट अवेलेबल है, एंड हाउ easy these treatments are, or how easy treating prostate cancer is? First of all, treatment this treatment depends on several factors. This is a multi-factor. It depends upon what is the stage of the disease and what is the overall health of the patient. Okay. And you should think of what is the benefit or risk of getting the treatment. You should calculate what is the benefit or risk due to the treatment. So all the factors depends on, well, three factors. What is the overall health? What is his survival life expectancy at the age of prostate cancer, and stage of the disease. There are several modalities. Yes, because we missed on certain things. Yeah. Okay. Basically, the treatment depends on several factors. One is you should decide on treatment depends upon three factors. One is stage of the disease. What is the stage of the disease? Then what is the overall health of the patient? And you should benefit or risk of treatment. You should think of that also. Right. After that, you decide. First of all, you staging you stage the cancer prostate by some tests. It is low risk disease or intermediate risk or a high risk disease. If the cancer is localized to the prostate, we can treat with radical prostatectomy surgery. We can remove the prostate tissue, total remove the prostate. If the cancer involves only a part of the prostate and confined to the prostate only, not spreading outside, that is called localized cancer prostate. That can be treated by removing the prostate. That is called radical prostatectomy. That is a gold standard treatment for localized cancer prostate. And that may be done by different ways. There is different variety of treatment available for doing radical prostatectomy. That can be done open prostatectomy, or by laparoscopic prostatectomy, or by nowadays robotic radical prostatectomy. And if another option is, if a localized tumor, you can go for, if a patient is not fit for radical prostatectomy, you can go for radiotherapy. Okay. If the prostate, the tumor involve the prostate and also involving the surrounding tissue, that is locally advanced cancer prostate, then we can go for sandwich therapy. That is, you can go for radiotherapy along with radical prostatectomy. If the prostate cancer spreads to the other parts of the body, then that is called metastatic cancer prostate. But it is spread to the other parts, multiple parts of the body, then surgery is not the option, because already spread to different parts of the body. We should treat with hormonal therapy. Hormonal therapy in the prostate cancer grows to its testosterone. Usually body का एक hormone होते हैं. One of the hormone is testosterone. That
enhances the cancer growth with medication, that is hormonal therapy, that is called testosterone depression therapy. Okay. Androgen deprivation therapy, ADT, Mhm. hormonal therapy. That can be by medical. You can give some injections of anti-androgen, or by doing the bilateral occlutomy. Dono testis, we remove the both the testes. Testis is producing the testosterone. Right. We remove the source of testosterone, so that we decrease the level of blood level of testosterone, so that it decreases the growth of cancer. These are several modalities. It depends upon what stage and what condition the patient has. There are several modalities available. It is a very good treatable disease if you diagnose early. I think that's a good news, a news of relief that it's treatable, and yes, various treatment is available. The only thing is that you need to keep in mind certain things like the condition of the patient, the stage of the cancer, and definitely few more things. इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल, प्रोस्टेट कैंसर के ट्रीटमेंट से जुड़ा एक सवाल हमारे व्यूअर ने पूछा है। आलोक दीक्षित पूछ रहे हैं, क्या प्रोस्टेट कैंसर का इलाज दर्दनाक है डॉक्टर? प्रोस्टेट कैंसर का इलाज दर्दनाक नहीं है. Okay. If you detect early, the treatment is simple. And slow growing tumor. So the treatment is, if you treat early, and then the result will be very good, and it is not painful. जैसे If कि you आपने diagnose early, it is not painful. ओके, जैसे कि आपने कहा भी कि कैंसर यानी जब आपके सेल्स जो है नॉर्मली मल्टीप्लाई करने लगते हैं, बढ़ने लगते हैं, फैलने लगते हैं, लेकिन साथ ही साथ नॉर्मली दूसरे कैंसर के केसेस में हम जानते हैं कि वो बहुत जल्दी फैलता है, लेकिन आपने कहा कि प्रोस्टेट का कैंसर बहुत स्लो ग्रोइंग है. That is the thing. If you detect early, we can treat early, and it will be not so painful. If you metastatic to the bone, then it is painful. Otherwise, So, it is not. Completely got your point, doctor. So if the bad news is that prostate cancer is very common in men, that the good news is that it's treatable, and it's treatable. The treatment is way more easy if you can detect it early. So the importance of prostate screening or getting yourself clean annually, scanned annually, becomes even more important. तो प्लीज अगेन हम कहना चाहेंगे, इनफैक्ट पूरा पर्पस ही यही है कि हम आपके प्रोस्टेट हेल्थ को लेकर अवेयरनेस क्रिएट करें और आपको ये बता सके कि कुछ भी अगर सिम्टम्स आपको लग रहे हैं तो डॉक्टर को दिखाना है. डेफिनेटली सिम्टम्स नहीं भी लग रहे हैं तो भी आफ्टर अ सर्टेन एज, आफ्टर 45 और 50 इयर्स ऑफ एज, हर साल एक प्रोस्टेट स्क्रीनिंग इन द केस ऑफ मेन, बिकॉज ये मेल्स में ही ये ग्लैंड होता है, बहुत जरूरी है. कुछ और सवाल मैं हमारे व्यूअर्स के ले लेती हूँ. अभिषेक मिश्रा पूछ रहे हैं, हाउ कैन आई रिड्यूस द साइज ऑफ माय प्रोस्टेट विदाउट एनी सर्जरी? आई एम श्योर इनको प्रोस्टेट एनलार्जमेंट का इशू होगा, इसलिए ये सवाल ये पूछ रहे हैं. That is a different issue. If your prostate is enlarged, you don't treat the enlarged prostate. You have to treat if you are symptomatic. If you are symptomatic because of enlarged prostate, then you should treat the enlarged prostate. If you have you don't have any problem, no urinary problem, or you are not symptomatic, or your pH is normal, then you don't have to treat the size of the prostate. You don't have to treat the size of the prostate. Okay. If your enlargement of prostate causing you discomfort or causing you any problem, then you treat the size. There are some medications which can decrease the size of the prostate. ओके. अच्छा, वापस अगर हम प्रोस्टेट कैंसर की बात करें डॉक्टर, अगेन बिकॉज आपने कहा कि ये बहुत कॉमन है, तो मान लीजिए एक पेशेंट है जिन्हें प्रोस्टेट कैंसर होता है, अर्ली डायग्नोस हो जाता है, अर्ली डिटेक्शन हो जाता है, ट्रीटमेंट भी हो जाता है, तो अब ट्रीटमेंट के बाद एक पेशेंट की लाइफ कैसी होगी? क्या यूरिनरी से रिलेटेड, क्योंकि प्रोस्टेट जो है वो डेफिनेटली ब्लैडर के ठीक नीचे ही होता है, यूरिनरी का जो ट्रैक है वो प्रोस्टेट से ही गुजर के जाता है, तो ऐसे में उसके बाद यूरिनरी सिस्टम को लेकर अगर हम बात करें तो क्या एक नॉर्मल लाइफ को जी पाते हैं? प्लस क्योंकि अगेन जैसा कि हम कह रहे हैं कि सेक्स लाइफ भी एसोसिएटेड होती है प्रोस्टेट से. Yes, yes. Cancer prostate also affected. Cancer prostate will affect. There is some
some kind of erectile dysfunction, urinary incontinence, maybe there. Right. But the complications of urinary symptoms, it differs of treatment to treatment. Okay. If you go for a radical prostatectomy because of for the CF cancer prostate, after radical prostatectomy, patient can have urinary incontinence for months to years and may have erectile dysfunction, may have bladder outlet obstruction. These are the main complaint is the urinary incontinence after surgery. Right. After radical prostatectomy, patient may have erectile dysfunction. Okay. Likewise, if patient getting radiotherapy for cancer prostate, patient may have bladder irritative symptoms like dysuria, increased frequency of urination, hematuria, blood in urine, or bowel problem, irritable bowel syndrome, loose motions. Then, because of side effects of the radiation to the surrounding structures like bowel, GI tract, or bladder. So then it depends on the treatment modality. राइट राइट सो जो भी आपने प्रॉब्लम्स बताई हैं ट्रीटमेंट के बाद की इन कॉम्प्लिकेशंस को कम करने के लिए क्या कर सकते हैं ये डॉक्टर? हाँ, it depends upon the modality of treatment. If you go for radical prostatectomy, you should go for not sparing radical prostatectomy. That will decrease the incidence of erectile dysfunction or incontinence, or you increase your skill. But in a if you increase the size of the urethral stump, okay, so today we are talking about prostate cancer. We are also trying to raise awareness regarding this very issue of prostate cancer. वेलकम बैक डॉक्टर. यस, कुछ और सवाल मैं हमारे व्यूअर्स के ले लूंगी. हमारे साथ श्वेता वर्मा है, पूछ रही हैं व्हाट आर द नेचुरल वेज टू कीप योर प्रोस्टेट हेल्दी. हम प्रोस्टेट को हेल्दी कैसे रख सकते हैं? That is one thing is you regular exercise and decrease the fat intake, alcohol intake, and regular screening of the prostate after the age of 50 is equally important. Okay. मुझे ये बात बड़ी अच्छी लगी कि श्वेता ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं. प्रोस्टेट ग्लैंड जो है फीमेल में नहीं होता, मेल्स में होता है, लेकिन फिर भी आई एम श्योर वो अपने किसी रिलेटिव के लिए, हस्बैंड के लिए, बेटे के लिए, किसी के लिए पूछ रहे हैं, अपने नोन के लिए पूछ. हाँ, एग्जैक्टली. लेकिन ये बहुत अच्छी बात है डॉक्टर. आमतौर पर होता क्या है, प्रोस्टेट से रिलेटेड जो भी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, सिम्टम्स होते हैं, उनको लेकर बहुत ज्यादा बात नहीं किया जाता फैमिलीज में, एंड द पेशेंट कीप ऑन सफरिंग इन साइलेंस. Now, the whole purpose of the session again is that we also create awareness among the family members कि अगर आपको लग रहा है कि आपके घर में कोई है जिनको तकलीफ हो रही है, you know, the symptoms, if they are there at all, they are quite visible. If a person is continuously और बार-बार कोई वॉशरूम जा रहे हैं खुद को रिलीव करने के लिए, या रात में बार-बार नींद खुल रही है वॉशरूम जाने के लिए, तो एज अ फैमिली मेंबर भी हम बातचीत कर सकते हैं, डॉक्टर के पास लेकर उनको जा सकते हैं, क्योंकि हो सकता है साइलेंस में सफर करते करते इतना टाइम वेस्ट हो जाए कि जब तक हम डॉक्टर के पास पहुंचे तब तक स्टेज बहुत ज्यादा बढ़ गई हो, या जो प्रॉब्लम है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो गया हो. तो ऐसे में फैमिली मेंबर कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं डॉक्टर प्रोस्टेट कैंसर या प्रोस्टेट से रिलेटेड चीजों को लेकर? Because any cancer, there is a psychological depression factor to the patient and patient's relatives. It is better to entertain the patient or to decrease his psychological depression. By you should encourage the patient to get it treated, or you should encourage the patient that this treatment is there and you will be cured, or if you go for early detection, that can be cured. This cancer is a very good cancer. Basically, prostate cancer is one of the good cancer in your body. It is one of the organ where cancer is very good and the result is very good. You should know and you should aware about that, and you tell the patient that this result is very good, your survival is very high, and you will not die because of prostate cancer if you treat early. Right. Everybody thinks that cancer means death.
That's why they are psychologically depressed. Right, right. This very word is so scary. Cancer सुन के ही लगता है कि Yes, yes. जानलेवा है और जान लेकर ही छोड़ेगा। जानलेवा है। लेकिन हाँ। जैसे कि डॉक्टर कह रहे हैं, प्रोस्टेट कैंसर सबसे आसान कैंसर है ट्रीट करने के लिहाज से। बहुत इजी ग्रो करता है, तो इसलिए प्लीज अगर प्रॉब्लम है, कॉम्प्लिकेशंस है, कोई सिम्टम्स है एसोसिएटेड, प्लीज गो एंड कंसल्ट क्वालिफाइड यूरोलॉजिस्ट। दैट्स रियली इम्पोर्टेंट। एक और सवाल यहाँ पे पूछ रहे हैं हमारे व्यूअर दिनेश सक्सेना पूछ रहे हैं, प्रोस्टेट कैंसर की जांच कैसे होती है डॉक्टर? प्रोस्टेट कैंसर की जो जांच होती है, बेसिकली इफ यू हैव गो टू ए यूरोलॉजिस्ट, then you should go for a blood test. That is one of the plus I already mentioned, serum PSA, prostate specific antigen. Another is digital rectal examination and ultrasound of the prostate. These are the initial tests. If you give some, if the PSA is raised and abnormal rectal, if there is a hard nodular prostate in the examination and PSA is raised, then you should suspect there might be cancer. Then we go for prostate biopsy. If a biopsy came out to be positive, then we think of what is the stage of the disease. For the stage of disease, we'll go for CT scan, CT scan or PET scan or bone scan to do staging the disease. These are the basic evaluation. Okay. Then we treat accordingly. Fair enough. डॉक्टर कैंसर के इलाज के बाद कहते हैं कि फॉलो अप बहुत जरूरी है। प्रोस्टेट कैंसर के केस में क्या है? Follow up, if it also depends upon the what type of treatment you already given. Okay. If it is radical prostatectomy, if surgery is done, if radiotherapy was given, if some patients also, if life expectancy, one of the example bata raha hu, मान लो life expectancy is less than 10 years, and the patient is the advanced age and multiple comorbid factor, patient is not suitable for any surgical patient, and patient is having low risk disease, then we'll go for active surveillance. Surveillance in the sense, we don't give him any treatment because the side effect so much, we're not giving to him the treatment. We'll follow that patient every 3 to 6 monthly for 1 year, then every year for 5 years. So what we do, we go for a serum PSA, digital rectal examination, and prostate biopsy. We will follow that. In another case, if a patient underwent radical prostatectomy, then we should go for follow-up by serum PSA level, digital rectal examination, or if a patient have bone pain or advancement of the disease, then we go for any bone scan or CT scan. Most of the time, we should follow up with serum PSA, rectal examination, or any CT scan or MRI in the follow-up period for every 3 to 6 months for initial 4 to 5 years, then every year. Exactly. Okay. कुछ और सवाल हमारे व्यूअर्स पूछ रहे हैं, प्रोस्टेट एनलार्जमेंट से रिलेटेड काफी सवाल है, मैं ले लेती हूँ। अदिति श्रीवास्तव है, हाउ कैन वी रिड्यूस दिस प्रॉब्लम सर? माय ग्रैंडफादर इज सफरिंग फ्रॉम एनलार्ज्ड प्रोस्टेट, कैन इट बी रिड्यूस्ड विदाउट एनी सर्जरी? Yes, it can be, but first we evaluate the patient by doing some ultrasound and some flow test and urinary test and serum PSA. We initially evaluate that patient with all these 4 tests. Then we will decide what should be done to the patient. If the patient is indicated for surgery, then we go for surgery. If he not indicated for surgery, we'll give some medication to decrease the size of the prostate and decrease the symptoms of the prostate. Right. Pratham Singh पूछ रहे हैं, does BPH worsen with age? Yes, it can be, because it grows with age, and the symptoms will increase if you not are getting treated or evaluated. Right. Now the thing is, doctor, as I was mentioning in the beginning, that normally, because prostate से related जो भी दिक्कतें होती हैं, enlarged prostate के भी जो symptoms है, वो urinary से related ही normally रहते हैं. And normally men will, take it like, as I'm aging, I will have to face these problems. They'll never relate these things with a condition or related to prostate, etc. They'll just say,
कि ये तो एजिंग के इफेक्ट्स हैं, बार बार अगर यूरिनेशन के लिए जा रहे हैं, फ्रीक्वेंसी है, अर्जेंसी है, इनकम्पिटेंसी है, तो भी हम कहते हैं कि लीकेज है या जो भी है, हम कहते हैं कि एज हो रहा है तो ये तो होना ही है। लेकिन आप कह रहे हैं कि एज होना है तो ये होना ही है, ऐसा नहीं है। आप अगर एक रेगुलर स्क्रीनिंग कराएंगे तो हो सकता है उसका पता चल जाए और ट्रीटमेंट्स अवेलेबल है। तो अगेन ये जो एक नोशन हमारे दिमाग में है कि हमारी एज हो रही है तो ये तो होगा ही, और इसको लेकर जो हम नजरअंदाज करते रहते हैं अपनी मेडिकल कंडीशन को, ये कितना खतरनाक साबित हो सकता है। यस डेफिनेटली, ये बहुत ही खतरनाक है। नॉर्मली लोग कोरिलेट करते हैं कि बिकॉज ऑफ एजिंग, और मेरे को तो डायबिटीज है, हाँ मेरे को डायबिटीज है, मेरा मसल वीक हो गई है, इसलिए मेरे को प्रॉब्लम हो रहा है। दैट्स व्हाई दे मिसकंसेप्शन इज दैट मेरे को डायबिटीज है, मैं पानी ज्यादा पी लिया, मेरे को मेरा बॉडी वीक हो रहा है। That's why these problems are developed, but they don't know that that is because of in this age only. In the prostate is disease of aging. It is not developed in young person. Every male has a prostate, but prostate symptoms only developed after 50 only. They should know that. Will aware the public that after 50, if you have a urinary problem, always go for a prostatic screening or prostatic checkup, urological checkup. राइट। तो बहुत सिंपल सी बात है, 50+ अगर आप हैं और आपको सिर्फ एनुअली एक स्क्रीनिंग कराना है, प्रोस्टेट टेस्ट कराना है, और अगर सब ठीक है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और इनकेस कोई दिक्कत है तो जैसा डॉक्टर बता रहे हैं कि इलाज बहुत आसान है, चाहे वो एनलार्ज्ड प्रोस्टेट का हो, बीपीएच का हो, या फिर प्रोस्टेट कैंसर का हो, लेकिन जरूरी बस इतना ही है कि हम टाइम पे डायग्नोस कर लें। प्रोस्टेट कैंसर को लेकर एक बहुत आम सवाल होता है डॉक्टर पेशेंट्स का या उनके घर वालों का, कि कैन अ मैन सर्वाइव प्रोस्टेट कैंसर? क्या कहेंगे आप? There is a very yes, there is a big yes. Prostate cancer patient can survive if you treated the patient early as possible. Because the survival rate is very high. I think if you go for a treatment of the prostate cancer early, that patient will never die of prostate cancer. He may die with another condition, but he will never die with prostate cancer. Prostate cancer. I think that was really important, and I'm sure कई ऐसे viewers हैं जो देख रहे हैं, उनको लग रहा होगा कि अरे जो हम या हमारी फैमिली मेंबर जिस तरह के conditions देख रहे हैं, symptoms देख रहे हैं, we should need to go and consult a urologist, और मे बी अब उन्हें थोड़ी राहत भी मिली होगी ये सुन के कि ट्रीटमेंट भी है, अच्छे ट्रीटमेंट भी है, और प्रोस्टेट कैंसर से आप मरेंगे नहीं। दूसरे 10 years survival rate if you treat the early cancer prostate is around more than 90%. That's a good news again. So again, viewers, अगर symptoms हैं, दिक्कत हो रही है, तो please go and consult your doctor. कई बार जैसा हम बार-बार कह रहे हैं कि हम सालों में सफर करते रहते हैं, बात नहीं करते हैं इस पे, टैबू भी है थोड़ा, यूरिनेशन से रिलेटेड चीजों पे बात करना, या सेक्स लाइफ में अगर कुछ ठीक नहीं चल रहा है उससे रिलेटेड चीजों पे बात करना घर वालों से, या डॉक्टर के पास जाना, और प्रोस्टेट इन दोनों से ही जुड़ा हुआ है। तो डॉक्टर, ऐसे में कई पेशेंट्स आपके पास आते होंगे जो बहुत ज्यादा वक्त जाया करने के बाद आप तक पहुंचते होंगे, और आपको लगता होगा कि अगर ये पहले आते तो ट्रीटमेंट बहुत आसान होता, बहुत जल्दी ये ठीक हो जाते, शायद किसी और चीज की जरूरत नहीं पड़ती, कुछ दवाइयों से कुछ दिन में ही ठीक हो जाते। तो ऐसे में आप अपने पेशेंट्स को क्या समझाइश देते हैं? बेसिकली जो ऑलरेडी EP patient comes late with multiple metastases and spreading to the all over the body, then I'm not giving them any negative feedback. I'll give them. I will always give them a positive feedback that okay, you came late, but it is treatable. I'll treat you, and your survival will be better with treatment. And you will not disheartened that your cancer is spread to so much of organ that it is not treatable. I will die in 6 months, 1 year. I'll reinforce them that you will not die if you get the treatment. Then you will never die with this prostate. I'll give you some survival benefit. Right. आशु सिंह पूछ रहे हैं, हम कैसे जान सकते हैं कि प्रोस्टेट कैंसर तेजी से या धीरे-धीरे बढ़ेगा? That is again on evaluate on the test. Some tests you have to do some tests. जैसे I already some blood tests like serum PSA, some CT scan, MRI.
to staging the cancer, if it is increasing or not. जैसा हम बार बार कह रहे हैं कि प्रोस्टेट से रिलेटेड जो इश्यूज है, चाहे वो एनलार्जमेंट का हो, बीपीएच या फिर प्रोस्टेट कैंसर हो, वो एक एज के बाद ही होता है, नॉर्मली 45-50 इयर्स के बाद होता है। ऐसे में आपने ये भी कहा कि अगर आपकी फैमिली में हिस्ट्री रहा है तो फिर स्कैन करवाना, डॉक्टर से मिलना ये और ज्यादा जरूरी हो जाता है। अगर फैमिली हिस्ट्री है प्रोस्टेट कैंसर की, तो कब हमें, मतलब कौन सा एज सही रहेगा जब हमको जाके एक यूरोलॉजिस्ट से सलाह लेना शुरू कर देना चाहिए? 45 to 50. ओके, एंड इज देयर एनी वे जेनेटिक या हेरिडिटरी वाले जो केस होते हैं जिसमें हम प्रिवेंट कर सके या उसको डिले कर सके? Yes, prevention, it is not we can't prevent, but if you regular screening, we can get it early detected. But prevention is overall prevention by decreasing your weight, regular exercise, decrease your fat diet, and regular screening. That is another way of prevention. राइट। फिर आपने ये भी कहा डॉक्टर कि अगर बहुत ज्यादा एज हो गई है तो कई बार आप बहुत सर्जरीज या इस तरह के नहीं उनको एडवाइस करते हैं, दवाइयां देते हैं या एक रूटीन फॉलोअप चेकअप उनका कराते हैं। या ऐसे में क्या कॉम्प्लिकेशंस उन्हें आ सकते हैं? क्योंकि डेफिनेटली एज बहुत है, मान लीजिए 80+ है या 90+ है, अब वो सर्जरी नहीं करवा पा रहे हैं, आप भी नहीं एडवाइस कर रहे हैं। Complications are mostly because of spread to the different organs. If you spread into the bone, this cancer spread into the bone may get fractured. Okay. The spine got damaged. That is the patient patient complains of severe bone pain, or patient becomes paralysis because of damage to the spine and this spinal injury, fracture in any bone, pelvic bone fracture, rib fracture. Then they came up with a patient with the EP metastasis to liver, the loss of appetite, loss of weight. He's not taking any food. The weight becomes decreased to some level, and hemoglobin level decreased. If kidney function deranged. Right. These are the complications. Complication of the spreading organ. If he spread to bone, the complication due to bone, that is fracture or spine. If there is injury to the nerves, then paralysis. If liver, it is loss of appetite, loss of weight. If it's in the bone marrow, then the blood cells becomes stuck, the patient become anemic. If the kidney becomes blocked because of ureteric, if we obstruct the ureter, both the ureters, the kidney become blocked, the patient came up with a renal failure. Okay. तो अगेन बिकॉज प्रोस्टेट, जैसा कि हमने पहले भी बात की कि यूरिनरी जो सिस्टम है उसी से एसोसिएटेड है। एसोसिएटेड इसलिए क्योंकि ब्लैडर के ठीक नीचे होता है और जो यूरिनरी ट्रैक जाता है वो प्रोस्टेट से होके गुजरता है। तो ऐसे में डॉक्टर, अगर प्रोस्टेट मतलब कैंसर ना भी, अगर हम दूसरी भी जो प्रॉब्लम्स हैं प्रोस्टेट से रिलेटेड, बीपीएच है, तो ये केस अगर हम बहुत ज्यादा इग्नोर करते रहे, नेग्लेक्ट करते रहे, तो क्या यूरिनरी सिस्टम में जो एसोसिएटेड ऑर्गन्स है, किडनी हुआ, ब्लैडर है, इन पे भी असर पड़ सकता है? That may be one of the complication, retention of urine. Okay, क्या है वो डॉक्टर exactly? Exactly, you can't able to urinate. Your bladder becomes full. Then gradually the bladder enlarge. Then the back pressure changes. The kidney becomes failed because of dilatation of the kidney. There is stone. There will be recurrent UTI, urinary tract infection. There may be recurrent stone formation in the bladder or kidney, and the failure of the kidney, and any bleeding in the bladder. Recurrent UTI, retention of bladder, then hydronephrosis, the kidney, fullness of the kidney, renal failure, stone in the bladder, stone in the kidney. These are the complications of और इन सबसे हम छुटकारा पा सकते हैं एक छोटे से एनुअल स्कैन के साथ कि हम हर साल जो है जाके एक प्रोस्टेट स्क्रीनिंग कराते रहें। तो मेल्स, ऑल द मेल व्यूअर्स या सभी मेंबर्स के लिए भी ये जानकारी जरूरी है। अगर आपके घर में मेल्स हैं who have crossed 50 years of age, please make them go and consult a urologist, make them go for an annual screening. That's really important. And doctor, before we sum up the whole session, any take home message for our viewers? Take home message is this is the one of the most common cancer in the male population after skin cancer.
So it is most important, and it is one of the slowest growing cancer. It is treatable if you diagnose early, and the survival benefit is very high. And if you treat the patient early, then the patient will not die because of cancer prostate, and he may be die due to other causes, but he will not die because of cancer prostate. So it is very important. If your age is more than 50, you go for a prostate screening with serum PSA and digital electron examination and scan of the prostate after the age of 50, or consult a urologist after age of 50 yearly. That was a very informative and important message that you just started, and I'm sure our viewers will take this message really seriously. Thank you so very much, Dr. Prashant Kumar Pradhan, for your valuable time, sir, and it has been a very informative session for all of us. Thank you so very much. Thank you. Thank you for having me. Thank you, and we really look forward for many more such sessions in coming times. Thank you once again. Viewers, thank you for your excellent participation. For more information and updates, stay connected on our FB page, Bladder Wellness. We are also available on YouTube, Twitter, and Insta. Thank you. Good day.